बनता है। घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi. Let's take a look at some stories of this week's episode. Villages of illegally occupied Gilgit-Baltistan suffering due to poor infrastructure, government turning a blind eye. Locals in Jagir Basin area of Gilgit complain about staff shortage in the hospital. Harvesting of strawberry going on in full swing in Kashmir. Punch hosts a 2-day cultural and craft festival to preserve the region's rich heritage. And later in a section of Incredible India, we'll take you to the National Rail Museum in New Delhi to explore the history of rail transport in India. The infrastructure across the villages in illegally occupied Gilgit-Baltistan is lying in shambles, but the government doesn't seem to pay any heed. Be it roads, schools or the drinking water facility, villagers are left bereft of even basic facilities. So today we'll take you to 2 such villages in the region that are suffering due to a pathetic attitude of the authorities. Have a look. Villages of illegally occupied Gilgit-Baltistan have been for long suffering at the hands of inefficient administration. Though blessed with an abundance of natural beauty and resources, they are lying in the most deteriorated state. One such village is Khur, an ancient settlement of Gilgit. Home to around 250 households, the village is being completely ignored by the administration. The road infrastructure in this area is lying in the state of despair, creating a lot of problems for the commuters and passerby. Locals say that even after several complaints, neither the proper road has been built, nor the boundary walls on their periphery have been repaired. They further state that even though the authorities are aware of this situation, they have failed to take any action. यहाँ रोड की ये जो खस्ताहाली है उसको देख के जो टैक्सी वाला है वो भी इधर आने से कतराते हैं। टैक्सी वाले भी ये जो मौजूदा जो हालत है हमारे इस रोड की, ये जो हमारे जीबी सेक्रेटरीट है वहां से लेके नीचे बिच्छू चौक तक यही हालत है। और ये हालत जो है पिछले 7-8 सालों से है। रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और दीवारें नहीं हैं। और बराए मेहरबानी हमारी रिक्वेस्ट जो है सीएम और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनका भी, चीफ सेक्रेटरी, आईजीपी, हमारे जो जर्नल है एफसीएन के, वो भी हमारे साथ ही ऊपर ही रहते हैं। उनको भी इस हालत का उनको भी पता है, बाकायदा तौर पर उनको इदराक है, लेकिन उसके बावजूद न वो एक्शन लेते हैं, न सिप्तेन साहब, न उस्मान साहब, न सीएम। रोड न होने के बराबर है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई इनको तवज्जो दिया ही नहीं। इस रोड के ऊपर इनकी बुरा हालत है। यहाँ के आवाम को चाहे कि इस पे थोड़ा वो करे, मिले, यहाँ पे कोई जलसे जुलूस करे ताकि हुकूमत होश में आ जाए और इनको थोड़ा रोड की मेंटेनेंस कर ले। यहाँ पर जब से तो हम यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पर कोई चलने के काबिल रोड है ही नहीं। Besides poor roads, water scarcity is another big issue. The village is not receiving proper water supply for years, and the authorities too are not paying any heed. Locals say, though a water storage tank was allocated to them around 10 years back, but even to this date, it has not been constructed. हम इस इलाके के पुश्ती बाशिंदे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे यहाँ पानी का बहुत बड़ा इशू है। पानी आता भी है तो 10-15 मिनट, वो भी कभी जो है
समझो कि पानी आता ही नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आपने अच्छा, दूसरी बात, जो टंकी हमें मंजूर हुई है उसका अभी तक काम शुरू नहीं है। तकरीबन 5-10 साल तकरीबन उसका हो चुका है। Lack of educational infrastructure is also affecting the locals in Khur area. There are no primary or high schools, due to which local residents have to shift to other places to provide education to their children. यहाँ पे हमारे हल्के में मयारी तालीम न होने की वजह से काफी मसाइल है। बच्चों को हम यहाँ से, छोटे छोटे बच्चों को जुटियाल हमें लेके जाना पड़ता है या हयात स्कूल लेके जाना पड़ता है। फर्स्ट कमांडर साहब, जनरल साहब हमारे पड़ोसी होने की वजह से हम उससे दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ पे जो है एपीएस या हयात स्कूल की कोई प्राइमरी सेक्शन यहाँ पे मुंतकिल करे, तो हम उसका बहुत शुक्रगुजार हैं। The illegally occupied Gilgit-Baltistan has been reeling under the misrule of Pakistan for more than 7 decades now. Till date, Pakistan has only plundered the resources of the region, but has done nothing for its development and betterment. The successive governments in Gilgit-Baltistan too have only passed the ball from one court to another and have significantly failed in realizing the demands of the local people. The healthcare sector has always remained as a matter of serious concern for the people of illegally occupied Gilgit-Baltistan. There is a wide spectrum of issues in this sector, among which the ubiquitous lack of doctors tops the list. There are several hospitals in the region that have infrastructure, but due to lack of staff, patients have to travel to major cities for better treatment options. One such hospital is located in Jagir Basin area of Gilgit. Have a look. Even after having a hospital equipped with all necessary medical infrastructure, the locals in Jagir Basin area of Gilgit are still deprived of basic health care. The reason being the dire shortage of staff in the hospital, which is leaving patients unattended. Locals say despite having facility of beds and benches, the hospital isn't able to admit patients due to unavailability of doctors and nurses. They are urging the authorities to resolve their issue on an immediate basis. हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास अमला नहीं है और एक्सरे का एक ही आदमी है, लाजमी बात है, दूसरे की ज़रूरत है। इसी तरह हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर 2 हों, 3 हों, एडमिट सिस्टम हो, इनडोर आउटडोर सिस्टम हो, और यहाँ अमले के अलावा और निचला स्टाफ भी, स्पेशलिस्ट के अलावा निचला स्टाफ की कमी है, उसको पूरा किया जाए। The geographic location of Gilgit-Baltistan along with topographical nature makes it prone to harsh climatic conditions. Such vulnerabilities along with lack of basic health care add to woes of the people. Locals in different parts of the territory have for long been raising the issue of shortage of doctors and medical staff in hospitals, but the government has failed to address their problems, leaving them to suffer. हमारे तमाम अमले से और सेक्रेटरी हुकाम बाला को हमारा इस्तदा है कि हमारे ये अस्पताल को जल्द से जल्द, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन सिस्टम, सर्जन और दूसरे एक्सरे में भी हमारे बंदे कम है और ये लेबॉर्ट्री में भी हमारे बंदे कम है। इनको फौरी तरीके से या अच्छे तरीके से यहाँ इसको सही तरीके से रन किया तो हमारे ये जागीर बसीन का नहीं है, तमाम ये भी लेवल पर उनको सहूलियत का मुनासिब मालूम हो तो सहूलियत यहाँ हो सकता है। यहाँ पर बाकी देश क्या सिटी अस्पताल उससे भी यहाँ पर सहूलियत अच्छे, बैठना उठना, मरीज को आना जाना, रात को तकलीफ भी नहीं है, बैठने के लिए भी सारी सहूलियत यहाँ पर बहुत मौजूद है। इसके
अलावा यहाँ पर हमारा सुनने वाला कोई नहीं होने की वजह से हमारा ये अस्पताल पीछे रह गया है। इसलिए इस्तदा है कि हमारे हुकाम बाला से कि हमारे अस्पताल को जल्द से जल्द अगर अच्छी तरह से अगर रन किया तो बहुत मेहरबानी होगी। Over the years, the unemployment rate has been climbing up rapidly in Gilgit-Baltistan, and people here are in dire need of government assistance when it comes to healthcare and other forms of social security. However, Pakistan, on the contrary, has ensured that people in this illegally occupied region continue to reel under its misrule that provides a life riddled with discrimination and misery. And next we move on to Jammu and Kashmir, where harvesting of strawberry is going on in full swing. It is the first fruit which is harvested in Kashmir after 6 months of harsh winter. The growers are expecting good profit this year due to bumper produce. Have a look. Farmers in Gassu Bhatpora village, which is located on the outskirts of Srinagar city in Hazratbal Tehsil, are busy in the harvesting process of strawberry crop. With baskets or buckets in the hands, every morning they start reaping the fruit in their fields. This year, despite unseasonal hot weather and late rainfall that pushed the harvesting season from May to mid-April, the production is quite satisfactory as compared to the last year. This has brought great cheer in the village of Gassu, which has the highest number of people growing strawberries and is famously known as the Strawberry Village. ये तो स्ट्रॉबेरी विलेज है। यहाँ पे जो हाउस वाइफ्स हैं वो तो ये इसी काम में लगे हैं क्योंकि उनका रोजगार इससे आसानी से आ जाता है। ये जो एरिया है ये श्रीनगर से एटलीस्ट 15 किलोमीटर के फासले पे वाक़ा है। ये गासू भटपुरा के नाम से मशहूर है और इसको स्ट्रॉबेरी विलेज भी कहा जाता है। जो हमारा स्ट्रॉबेरी है ये हमारा फर्स्ट क्रॉप है जो हमारा यहाँ पे हार्वेस्ट होता है। स्टोन फ्रूट से पहले हार्वेस्ट होता है, इसलिए इसमें लगभग 1 महीना हमें हो गया हार्वेस्ट करे हुए। कर रहे हैं इनफैक्ट इसकी तो आपको पता है कि इसमें बहुत पिकिंग्स होती है, तो दूसरी तीसरी पिकिंग इसमें चल रही है। और माशाल्लाह इस बार हमारा मौसम थोड़ा बाकी सालों के बनिस्बत थोड़ा गर्म ही रहा, तो इसका सीजन जो है इसका थोड़ा अर्ली हमारा आ गया। In recent years, strawberry has emerged as a cash crop in the valley, with many vegetable farmers having switched to strawberry cultivation. At present, its production ranges from 2,000 to 2,500 metric tons in the valley. In Gassu village, farmers cultivate tons of exotic berries on hundreds of acres of land every year. The village is also the first one to produce strawberries in the entire Kashmir Valley. After picking the strawberries, farmers take them home to pack them in plastic boxes before selling them at the fruit mandi. The fruit, due to its perishable nature and extremely short shelf life, needs to be transported quickly for consumption. And this year, it will be reaching the markets much before due to early harvest. Moreover, farmers are also expecting good returns as tourists in large numbers are visiting the valley. लास्ट ईयर हार्वेस्ट हुआ था 5 मई को, लेकिन इस साल हीट वेव थी मार्च में, जिसकी वजह से ये 18 अप्रैल से ही स्टार्ट हुआ। और फ्रूट भी ठीक है और कस्टमर्स भी ठीक है, रेट भी इस साल इंशाल्लाह ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि फसल भी ठीक है। मगर पिछले 2-3 साल से कोविड था जिसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन इस साल उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा फ़ायदा देगा। इस साल टूरिस्ट भी ठीक है और माल भी मंडी में पहुंच पाता है ठीक टाइम पे,
और इस टाइम टूरिस्ट भी है, पोकारी भी रेडी वेडी लगाते हैं, मतलब बाहर लोग आते हैं कस्टमर्स, और यहाँ भी किसी को कोई कस्टमर आता है प्राइवेटली वो भी ले जाता है, या फैक्ट्री वाले आ जाते हैं वो जूस के लिए ले जाते हैं। ये जो क्रॉप अर्ली हार्वेस्ट हुआ इससे हमारा ये है कि मार्केट में अभी अवेलेबल हमें यही क्रॉप है, इसलिए इसका जो पैसा वगैरह है इसका वो भी अच्छा खासा हमें मिल गया। तो नो डाउट कहीं कहीं पे थोड़ा हेल स्टॉर्म वगैरह हो उससे थोड़ा सा डैमेज हुआ, लेकिन जो इसकी मार्केटिंग है या इसका जो पैसा हमें आ गया मोनोपोली होने की वजह से, यानी कि अर्ली जो हमारा ये क्रॉप हो गया, तो उसकी वजह से हमारा इसमें जो पैसा वगैरह है इसमें मार्केटिंग अच्छी हमारी रही। In Jammu region too, many farmers have shifted to strawberry cultivation as it is bringing them good financial gains. Horticulture department is also helping them by providing rupees 13,000 subsidy per canal of agricultural land for growing the fruit crop. Besides strawberry, Kashmiri fruits like apple, cherry, grapes, apricot and plum are also very famous across the world due to their quality and rich taste and are bringing good returns to the territory's farmers. Well, to revive the age-old culture of Jammu and Kashmir and bring the younger generation closer to its roots, a two-day cultural and craft festival was recently organized in Poonch. The event saw a wonderful mix of art, culture and heritage. Have a look. Poonch got engulfed in vivid colors of joy and exuberance as thousands of locals and tourists visit the district to be a part of the two-day cultural and craft festival. Organized by Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages in association with district administration, the event saw participation of around 200 artists from across the Union Territory. From Punjabi to Pahari dance forms, they presented a number of mesmerizing performances to spread cross-cultural awareness among the spectators. They even expressed their gratitude to the government for providing them with a chance to showcase their rich heritage. ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा यहाँ पे इतने सारे लोग, इतने सारा कल्चर, इतने सारे रंग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से इतने सारे एफर्ट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो थैंक्स करना चाहूँगी यूटी का, गवर्नर साहब का, कि बार बार ऐसा हो, बार बार लोग इकट्ठे हों, आपस में मित्रता बढ़े, आपस में प्यार बढ़े, तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के दर्शक बहुत अच्छे हैं, यहाँ का जो माहौल है बहुत ही अच्छा, पीसफुल है, लोग बड़े प्यार से रहते हैं। हमारे बहुत सारे डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हमारे लोग जो हैं उन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, यहाँ आए, उन्हें विटनेस किया ये प्रोग्राम। मैं ख़ास करके ये बताऊं कि इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि हम अपनी भूली बिसरी जो यादें हैं, जो हमारी रवायत है, जो हमारी तहजीब है, हमारा कल्चर है, उसको रिवाइव करें, अपनी नई नस्ल तक बताएं उनको भाई हमारा खाना, हमारा रहन सहन और हमारी तहजीब और तमद्दन क्या थी। A local music show put up by a group of artists was another highlight of the event. Accompanied by musical instruments, their melodious voices brought the audience to the edge of their seats. Artists urged to have more such events on a regular basis so that their culture is promoted. पूंछ की धरती पर बहुत अच्छे किस्म का प्रोग्राम हुआ है, बहुत दूर दूर से आर्टिस्ट आए और उन्होंने मनोरंजन किया और अच्छे किस्म से प्रोग्राम हुआ। बाहर पूंछ के लोग हमारे जितने भी थे इन्होंने हमारे साथ तावन दिया और बहुत अच्छे किस्म से हमारा प्रोग्राम जो है वो हुआ है और जो बाकी बचा वो भी हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम
बार बार होने चाहिए, ताकि हमारा कल्चर जो है पहाड़ी हो, गोजरी हो, जो भी मतलब ज़माने हमारे हैं उनमें मुख्तलिफ रंगोरंग प्रोग्राम हो रहे हैं। और ये मतलब हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं इनका भी जो है इंटरेस्ट वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो हम ये यूटी के जितने भी लोग हैं हम मशकूर हैं कि हमारा जो ये प्रोग्राम हुआ है, आने वाले कल भी हमारे प्रोग्राम इसी तरीके से होते रहें। As a part of the event, small entrepreneurs, college students and officials from various departments including agriculture, horticulture, tourism, sheep husbandry and even youth services and sports erected their stalls. While those set up by the departments made people aware about various schemes and policies related to their respective sector, others left the visitors spoiled for choice. With such events organized on a regular basis, it will not just lead to the promotion of crafts and culture, but also connect the younger generation to its traditional roots. And next we move on to our section of Incredible India, where today we'll take you to the National Rail Museum in New Delhi to explore the rail heritage of India, which is over 160 years old. Said to be India's first transport museum, the repository has the most extensive collection of trains ranging from miniature models to the full-scale train sets. Have a look. Spread across 11 acres of land, the National Rail Museum in New Delhi boasts of the splendid rich heritage of Indian Railway that started long back in 1853. Opened on 1st February 1977, it states the story of the world's fourth largest railway network that span over 1.2 lakh kilometers across the country. It is divided into two galleries, indoor and outdoor, that encapsulates all the memories and developments related to railways in India and also its contribution in independence struggle. इस म्यूज़ियम के साथ जुड़ी हैं उन सभी यात्राओं की यादें जो कि लगभग 200 साल के आधुनिक युग के इतिहास में भारतीय रेल ने और अन्य रेल प्रणालियों ने भी संजोई हैं। तो सिर्फ एक ये म्यूज़ियम नहीं, भारतीय रेल संभालता है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया को। साथ में एक बिल्डिंग है मुंबई में जो बॉम्बे वीटीज़ के नाम से प्रसिद्ध है, अब CSMT। तो ये सारे उस परिदृश्य में हैं जिन्होंने भारत के आज़ादी की लड़ाई को भी और नवीन भारत के सृजन को भी देखा है, समझा है, उसमें योगदान दिया है। In the outdoor gallery of the National Rail Museum, over 80 engines are parked ranging from Darjeeling coach, Hasang, Matran cars to several locomotives. The Patiala State Monorail Tramway is one of the most iconic artifacts at the museum. Introduced in 1907, this unusual train used to run on a single track and has been restored to full working condition at the National Railway Museum. Another major attraction is Sir Roger Lumley, which is the first passenger class electric locomotive that ran on the Indian Railways. Besides taking glimpses of historic trains, fun ride in the Joy train that runs along the perimeter of the museum can be another exciting activity to do in the outdoor gallery. Just by sitting at one place, visitors can enjoy the view of various trains and engines that fall along the way of the ride. अगली आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा जानकारी होगी
कि इसमें किस तरह से देश ने आगे तरक्की की है, कैसे कैसे जनरेशन चेंज हो रही है, ट्रेन ने भी कैसे तरक्की की, देश ने भी कैसे तरक्की की, उससे मालूमात पड़ता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। The modern indoor gallery in the museum is a unique combination of the historical collection, miniature trains, interactive games, modern simulators and communication. It is divided into 6 sections, which through interactive displays and models tell extraordinary stories of the Indian railways. It also has some remarkable collections of historical photographs, documents, railway artifacts, static exhibits, antiquated items and old furniture which enhance the experience of visitors. The Museum Authority also keeps on organizing exhibitions on different occasions to spread awareness about the country's rich heritage. यहाँ पर लोग 10 बजे से लेकर 4:30 बजे लास्ट एंट्री होती है, उसके बाद में वो 5:30 बजे तक रह सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बाकी राइड्स हैं उनका आनंद ले सकते हैं, जैसे कि जॉय ट्रेन है और एक छोटी टॉय ट्रेन है जिसके ऊपर आप बैठ सकते हैं, और सिमुलेटर्स हैं यहाँ पर, ये सब चीज़ें हैं। और कभी कभी हमारे यहाँ पर दिल्ली कैंट से एक ट्रेन चलती है फेरी क्वीन, जो कि दुनिया का सबसे पुराना वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव है, जिसका कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। उससे कभी कभी हमारे यहाँ पर वो होता है कि स्पेशल स्टीम रन होता है और लोग यहाँ से दिल्ली कैंट से रेवाड़ी तक जाते हैं। और कभी कभी हमारे एग्जीबिशन जैसे प्रगति मैदान हुआ और IR इंडियन रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन होता है, वहाँ पर कभी कभी हम लोग अपनी एग्जीबिशन लगाते हैं। The office of the Rail Museum has also been made from the old coach of a train, and the administrative department is working here. Visited by thousands of people every year, the Rail Museum aims to inspire curiosity, encourage thinking and promote social issues related to railways. And that's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team.